जी लोगन को तो काम आई है टोकनो, हम तो हैं दुबरे। And we got mulatto women for everybody that don't know. Mulatto women. Let us count to 12. 1 to 12. Within this counting, promise me, O humans, that you will be quiet. Shh. Pin drop silence in this 1 to 12 counting period. Can you do this? Good. Very good. One to 12. 12, you ask. Why 12? Okay, the trick lies here. 1 to 12 counting. This could be 12 seconds of the day, 12 hours in a day. Keep guessing. This 1 to 12 counting could also mean 12 months of an year. Depends on you, how you take my counting. But I insist, you have to be quiet during this 12 counting, 1 to 12 counting. No movement during my counting. We have always been in a hurry. Moving, rushing, a rat race for money and power. Struggling. Suspend all activities for a while and do some self-introspection, some self-analysis. Put your finger on your lip, close your mouth with a zip. Put your finger on your lip like this. Total stillness. Humans, different languages, different colors, castes, creeds, all have been dividing us. All humans are one, united. There is just one language of love. But now, this struggle for livelihood. Enough of the fight for resources. Just learn to live now. Not just survive, but live. Isn't this silence wonderful? Isn't this silence so new to you? So strange and unusual to cherish for life? Is not this stillness so beautiful, so refreshing? Total calmness, total peace, feeling of oneness of all humans, feeling of love and brotherhood. This silence will make us think and understand this fact. We all are one and must stay united. We are not used to this unity of humans, of mankind, but we will become familiar once we learn to be still. In this sweet moment of silence, we shall find a strange happiness, joy. But now you are not speaking. No language to be spoken during the counting. Less movement of your arms, please. You are slowly, unknowingly killing yourself, hurting yourself, bit by bit. A silent death. We have no time for ourselves. Look at that man working at the salt factory, engrossed in his work. He doesn't even know that his hands are bleeding, unaware. Then this salt maker will see the blood on his hands. The fishermen, when they reach the seas and see the whales, they kill the whales. The poor innocent whales. Cold-blooded murder. No guilt. They just have to kill. But all this will change
Then, at that moment of quietness, the fisherman will not kill the whale anymore. Once we learn to self introspect, we look deep within when we see within ourselves. Humans will stop absurd activity, absurd occupations of theirs. Just love and will be kind. That is why I say, make this world a better place. Stay quiet. No, no wars of any kinds. No war to save the planet. No war with bombs and guns. No war with weapons. No war with yourself. Just stop it. You may win a war, but at what cost? When all die, you will be alone. No one will survive after wars. You will be alone, victorious but lonely. Lonely at the top. So wars are futile, useless, and harmful. Thus I request you, warriors of the word, count up to 12. Stay silent in this time, during this counting, and see the consequences. There shall be peace and happiness everywhere. O warriors, you shall shed your weapons and wear clean clothes, the best of your clothes. And you will walk hand in hand with all humanity. You will acquire the pure feeling of brotherhood and fraternity. Just walking together in this stillness, in this silence, under the shade of affection, shade of the loving trees, shade of love. Free of tension, free of pain and agony, fully relaxed and at rest. No, please don't accuse me of teaching you to be lazy. No, I do not want you to be lazy or inactive. This is not what life is about. I am not advocating death and its benefits. No. All I am saying is, please, humans of the earth, of the word, look within yourselves. Meet your soul. Embrace it. Don't be so occupied with your occupations that you fail to live actually. Be truly alive. Be vigilant of the wonders of nature around you. Life is fantastic. Keep your eyes and ears open to the music, to the magic, the charisma of life. This is what I request of you. We have to understand ourselves. For this, we require total silence, a quietness, self-introspection. Why are we here? What we should be doing? Who are we? Think, just think during this hour of quietness. Do not kill your soul by the daily grind of life. Learn to live, not just survive.
to live. There is so much purity and goodness around you. The flowers, their innocence. Just look at the stars and the lights. You can be still and yet be working and active. Learn from the earth, learn from nature. Learn from the earth, learn from nature. What seems so still and even dead to us, it suddenly proves to be alive. The seed lying quietly for ages in the womb of the earth, suddenly sprouting to a sweet little plant. The egg which seems so still, the egg suddenly bursting with life, the seemingly barren earth. The earth suddenly turns green and lively. Wonders of nature. The pupa on that twig, the branch. It suddenly breaks open to release the so alive butterfly. Brightly colored butterfly. Hidden action, but very much there. There can be action in inaction. Don't be befooled into thinking that I want laziness or inaction. We all are one. There should be love and brotherhood everywhere. Know thyself. Understood my point? Understood the importance of silence? See the benefits of silence. Okay then. I am counting to 12 finally. I've taught you enough. Counting to 12 now. Promise me. Hey human, you I am talking to. You will be quiet in the madness of your life. After counting, I will go because I shall have done my bit. 1, 2, 3. Shh. Flamingo. The English book of class 12th. The poetry section. Name of the poem? Keeping Quiet. Chapter 3 of the poems. Who wrote the poem? The beautiful poem? Small poem? Pablo Neruda. A very famous name. Born in 1904, died in 1973. Pablo Neruda is the pen name actually of Neftali Ricardo Reyes Basalto. नेफ्टली असली नाम है पोइट का, बड़ा लंबा सा नाम है, नेफ्टली रिकार्डो रेस बसाल्टो. He was born in the town of Parel in Chile, South America. Neruda's poems are full of easily understood images. This makes them very beautiful. Neruda won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. Nobel Prize, very big thing. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection, अपने को समझना, अपने बारे में सोचना, एनालाइज करना,
हम क्यों आए हैं यहाँ? What is the purpose? Who are we? What is this word all about? And creating a feeling of mutual understanding among human beings. This is the purpose of the poem Keeping Quiet. छोटी सी पोएम, बहुत सिंपल सी इमेजेस बनाता है पोइट, लेकिन बहुत गूढ़ रहस्य छुपा है. Keeping quiet, a summary. The poet suggests that we all should stay silent while he counts up to 12. All people of the world must suspend their activities and should stay still during this counting period. During this time, the people must not speak in any language. They should avoid excessive gestures, gesture making, for example, excessive movements of their arms. This moment of total silence will be so extraordinary, so remarkable. No noises of the fast moving cars, the traffic, the engines. This will bring us human beings together. This moment of silence, it will make us be united. We shall be united during this strange, unfamiliar moment. हमें इस मोमेंट की आदत नहीं है, लेकिन आदत पड़ जाएगी. We will be happy. We will learn a lot from this silence. We shall forget our differences of colors, castes, languages during this time. The poet believes that this silence will teach us to take care of ourselves, to give time to ourselves. हम अपने को समय नहीं दे पाते, इतना व्यस्त रहते हैं कि कुछ देख ही नहीं पाते, कुछ बूझता नहीं है, कुछ समझ नहीं पाते. क्यों आए हैं हम यहाँ? Why are we here on this earth? What is the purpose of life? The salt gatherer, he has been very much busy collecting salt. नमक बनाने वाला हाथों से नमक इकट्ठा कर रहा होता है. He shall now see his bleeding hands. जब ये क्वाइटनेस आएगी तब वो देख पाएगा बेचारा कि अरे मेरे हाथों में तो खून है, हाथ खून से भरे हुए हैं, चोट लगी हुई है. अब देख पाएगा वो, अब तक तो वो बिजी रहा है. The fishermen have been cruelly killing innocent whales. फिशरमैन जाते हैं समुद्र में और वेल्स को मार देते हैं without thinking much. But this silence will make the fishermen to realize their folly, their mistake. They will get time to think, to introspect, to analyze. Now they will not kill the whales. They will not kill the whales now. उनको समझ आ जाएगी क्रिएचर्स को मारना गलत है, इनोसेंट क्रिएचर्स को मारना गलत है. ये कब समझ में आया? जब वर्ड साइलेंट होता है तो. In this moment, even the weapon makers will do some introspection and will stop making weapons anymore. Wars bring destruction. बहुत गलत होते हैं wars, लड़ाइयाँ गलत होती हैं. Only the victorious survive. एक आधी बंदा जीतता है, सारे मरते हैं, बाकी सारे सर्वाइवर्स नहीं होते. These winners will be so lonely. कहते हैं it is lonely at the top. ऊपर रहकर क्या कर लोगे, अकेले रहकर क्या कर लोगे, लोनली कहलाओगे. The poet believes, Pablo Neruda believes, that the quietness period will teach these fighters to shed their guns, their weapons. Instead, they will wear fine clothes, super fine clothes, clean, neat and clean clothes. मतलब they will show the best of their behavior. अच्छे इंसान बन जाएंगे, ये उससे सिंबॉलिक है. And walk hand in hand with their brothers under the shade of love, the shade of humanity, fraternity. Feelings of brotherhood will develop during this counting period. The poet assures.
पोइट कहता है कि मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाओ कि मैं कह रहा हूँ कि कोई एक्शन मत करो, लेज़ी बन जाओ. He insists that he does not want inaction or laziness by making us stay silent. No, he does not want any association with death, not even that. All he wants is violence to end and love to develop. There is a rat race for money and power in the world. The quietness will make people realize the futility of material things. मतलब कितना बेकार है चीज़ों को इकट्ठा करना, एकत्र करना, लड़ना पावर के लिए, पैसे के लिए. Then these persons, human beings, will be so relaxed and tension free when they stop fighting for money. They will get time to analyze themselves. They will realize that they are slowly actually killing themselves. They have been doing so. Stillness is not death, according to the poet. It is actually the time to prepare for action and the joys of life. ये तो लॉ ऑफ नेचर है कि इनएक्शन में ही एक्शन छुपा होता है. इनएक्शन गिविंग बर्थ टू एक्शन. एग्जाम्पल्स बताए हैं बहुत सारे, जैसे कि ऑटम ट्रीज़ जो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद ट्रीज़ हैं कोल्ड क्लाइमेट के, अचानक ग्रीन टर्न हो जाते हैं, ग्रीनरी आ गई. ऑल्सो द सीडलिंग कमिंग आउट ऑफ द स्टिल अर्थ. हमें लग रहा है कि अर्थ है, धरती है, सॉइल है, लेकिन उसमें से फूट पड़ा एक अंकुर. द इनएक्टिव लुकिंग प्यूपा गिव्स राइज टू अ बटरफ्लाई इवेंचुअली. इसलिए स्टिलनेस बहुत ज़रूरी है, साइलेंस बहुत ज़रूरी है. कहते हैं ना, एकांतवादी बनो, थोड़ा एकांत में जीना भी सीखो ताकि समझ आए कुछ दुनिया की लाइफ की. वही कह रहा है बार बार पोइट का. क्या कहना है भाई, बड़ी सही बात कह रहा है वो, कि साइलेंस और स्टिलनेस की महत्ता दे शुड बी प्रैक्टिस्ड फॉर 12 months. वो जो 1 to 12 कह रहा है ना, बेसिकली वो मंथ्स की बात कर रहा है, जो मेरे को समझ आता है. दैट इज़ लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाना चाहता है मनुष्यों की. क्वाइटनेस हैज़ इट्स बेनिफिट्स, मैनी बेनिफिट्स. The poet wants us to learn the charisma of silence, the magic of silence. Keeping Quiet, a poem by Pablo Neruda. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our. क्या कहना चाह रहा है कि धरती पर रहकर हम कोशिश करें कि कुछ देर के लिए तो कोई भी लैंग्वेज भूल जाए, ना बोलें. बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उनको भूलें. कुछ क्षणों के लिए ही सही, 1 सेकंड के लिए हम रुकें. नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. कुछ देर के लिए तो अपनी आर्म्स को रोकें. बहुत ज़्यादा लटक मटक झटक है, बहुत हलचल है इस जीवन में. थोड़ा सा क्वाइटनेस के क्षण दिखाएं, क्वाइट रहकर दिखाएं. इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट. ये क्षण बहुत अद्भुत होंगे, लाजवाब. क्यों? क्योंकि हमने ये कभी देखे नहीं ना कि सारा वर्ड साइलेंट हो, थोड़ा सा चुप्पी साधे, कुछ सोचे, कुछ समझे, विदाउट एनी रश. कोई रश नहीं होगा, कोई भागा दौड़ी नहीं होगी फॉर अ चेंज. एंजिन्स की शोर शराबा नहीं होगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. यकायक ही इस अजीब अद्भुत अनुभव जो हमने कभी पहले किया ही नहीं, इस स्ट्रेंजनेस, इस साइलेंस के बीच हम अपने आप को इकट्ठा पाएंगे. यूनिटी हो जाएगी अचानक से इसके कारण, इस क्षण के कारण. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. ये ऐसे क्षण होंगे क्वाइटनेस के, चुप्पी के, जिसमें फिशरमैन को अचानक ही बुद्धि आएगी. वो सोच पाएंगे
कि अरे जो हम वेल्स को, हार्मलेस वेल्स को और इनोसेंट वेल्स को मारते आ रहे हैं, उनको हार्म पहुंचाते आ रहे हैं, वो करना गलत है। तो ये कब समझ में आया? जब वो थोड़ा सोचने बैठे, भाई साइलेंस हुआ। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो सॉल्ट इकट्ठे करने वाला मनुष्य है, जिसका कार्य ही वही है जॉब, वो अपने जॉब में इतना मशगूल है कि वो अपने हर्ट हैंड्स को देखता ही नहीं था। तो अब मौका मिला उसको इस क्षण में साइलेंस के, कि वो देख पाया कि अरे मेरे को तो अपने ही चोट लगी हुई है, इंजर्ड हैंड्स हैं। यानी अपने को समय दे पाया। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, ऐसे वॉरियर्स, योद्धा जो हर तरह की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, या तो ग्रीन वॉर्स जो अच्छे में आते हैं, भाई धरती के लिए लड़े जाते हैं कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, ऊर्जा बचाओ, वो वाले वॉर्स, ग्रीन वॉर्स, या फिर वॉर्स विद गैस, टॉक्सिक पॉइजनस गैसेस के द्वारा भी वॉर्स लड़े जा रहे हैं। वॉर्स विद फायर आर्म्स, हाँ हथियार, उनके द्वारा भी लड़ा जाता है। तो हर प्रकार के वॉर्स तो वॉर्स ही है ना एक्चुअली। तो सब तरह की लड़ाई से दूर हटो भाई, ठीक है, ये कहता है पोइट। इन सब में क्या रखा है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, आप ही बचे हो जो विजयी हो, तो बाकी सारे पैरिश कर गए हैं, डिस्ट्रॉयड हो गए, दे हैव गॉट किल्ड। तो आप क्या कर लोगे? इट विल बी अ वेरी लोनली लाइफ फॉर यू। सो दीज वॉरियर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो ये जो है ना वॉरियर्स, इनको भी चुप्पी के क्षणों में कुछ समझ आई और इन्होंने वॉर्स को छोड़ दिया, त्यागा, और अच्छे से कपड़े पहने और ब्रदर्स के साथ घूमे, ब्रदरहुड दिखाई। हाँ, क्लीन क्लॉथ्स का यहाँ पे मतलब है कि प्योरिटी ऑफ हार्ट हो गया, उनका आत्मा शुद्ध हो गई और वो सज्जन व्यक्ति बन गए। एंड दे वॉकड अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अब वो घूमे फिरे, जो कि उनके लिए अनयूजुअल था, इन द शेड, तो छत्र छाया में लव की और फ्रेटर्निटी की, डूइंग नथिंग फॉर अ चेंज, डूइंग नथिंग, अपने लिए क्षण रखे, कुछ सोचा, अपने को फ्री रखा, थोड़ी देर के लिए सोचा, एनालाइज किया। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. पोइट कहते हैं कि अरे मेरे को एक्यूज़ मत करो, दोषारोपण कि मैं इनएक्टिविटी करवा रहा हूँ आपसे, ये गुजारिश कर रहा हूँ कि लेज़ी बन जाओ। नो नो नो, दैट इज़ नॉट माई पॉइंट। What I want is लाइफ, आई एम टॉकिंग ऑफ लाइफ। मेरा मकसद लाइफ है, जीना, नॉट जस्ट सर्वाइवल बट लिविंग। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कि कोई इशू नहीं है। मैं डेथ की बात नहीं करता, मैं लाइफ की बात करता हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। तो बहुत प्यारी और गूढ़ लाइनें हैं, बहुत गहरी कविता है, सिंपल सी है पर बहुत गहरी है। क्या कहना चाह रहा है पोइट? कि अगर हम इतना सिंगल माइंडेडली, टोटल फोकस एक तरफ को रख के क्या जी रहे हैं, जो वो सब कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, कि हम अपनी लाइफ्स को मूविंग कर रहे हैं, हम अपने जॉब्स में लगे हुए हैं, सर्वाइवल के लिए लगे हुए हैं, इसी पे फोकस्ड हैं, सिंगल माइंडेडली। तो ये दिस इज़ रॉन्ग। और कुछ देर के लिए अगर हम कुछ ना करें और थोड़ा सोचे विचारें तो कितना अच्छा हो। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. शायद ये जो बड़ा सा साइलेंस है, ग्लोबल लेवल का साइलेंस है, ये बाधा बने और रोक पाए
इस दुखदाई ज़िंदगी को हमारी, जिसमें हम केवल चलते जाते हैं, फ्लो में, धारा में बहते रहते हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कुछ समझ ही नहीं रहे, सोच पूछ नहीं कर रहे कि हम कौन है भाई, क्या है, क्या क्यों आए हैं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। तो डेथ से डरते रहते हैं या अपने को डेथ की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं विद आवर एक्टिविटीज़। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. धरती हमें सिखा सकती है कि इतने पेसिमिस्टिक मत बनो कि अरे सब कुछ बुरा ही जा रहा है लाइफ में, लाइफ तो गई, बहुत बेकार जा रही है, एवरीथिंग सीम्स डेड, सब कुछ निराशावादी वाला अप्रोच हो रहा है आपका। ऐसे में धरती से सीखो कुछ। क्या भाई, कि जब धरती पर सब कुछ बैरन हो रहा है, सब बेकार हो रहा है, अचानक से धरती अलाइव हो जाती है, उसमें से अंकुर फूट पड़ता है, छोटा सा पौधा, ऐसी नई नई घटनाएं होती हैं, द अर्थ बिकम्स लाइव। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि घबराओ मत, लाइफ अच्छी होगी। जहाँ आपको डेड लग रहा है सब कुछ, या डेड एंड लग रहा है, वहाँ पर टनल, देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो अब समय आ गया है, मैं काउंट करता हूँ, अपनी गिनती करता हूँ, 1 से 12 की गिनती, और इसमें आपको क्वाइट रहना होगा, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कितनी बार, अच्छा सा समझा चुका हूँ। एंड आई विल गो। जब मेरा मकसद पूरा हो गया होगा तो मैं चला जाऊँगा, इसलिए मैं चला जाऊँगा क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो चुका है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि चुप्पी में कितना दम है, चुप्पी कितनी कमाल की चीज़ है। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। पैब्लो नेरूडा।